Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. Hello. Welcome to an absolutely special YouTube live broadcast. मेरा नाम है अंकित और आप जुड़े हैं हमारे साथ CoinSwitch के YouTube चैनल पर। 16th of September फ्राइडे की शाम है और आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट था। इथीरियम मर्ज 15 सितंबर को हमारे लगभग मिड डे के आसपास हो चुका है। काफी सक्सेसफुल रहा है मर्ज, which is why we've got this absolutely amazing panel of guests and experts here. I'm quickly going to introduce these folks. जो ये सब experts हमारे साथ अपनी अपनी टिप्पणियां देने वाले हैं. Right from Bengaluru, farthest from where I'm sitting in Mumbai, Buidlers Tribe के founder Pareen. Thanks so much for joining us. Hi Pareen. Hi Ankit, thank you for having me here. How are you doing? I'm good. How are you? फैंटास्टिक यार, मुझे लगता है बैंगलोर के मुकाबले मुंबई में ज्यादा बारिश हो रही है इस हफ्ते, सो आई एम ग्लैड यू गाइस आर स्टेइंग सेफ एंड ड्राई. Definitely, finally, and Awesome, merge celebrations यहाँ ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन सेलिब्रेशन ज्यादा हो रहे हैं. वी आर गोइंग टू कम टू ऑल ऑफ दोस celebrations, yes. बिल्कुल. परीन से हम जाने वाले हैं थोड़ी देर में इंडस्ट्री का क्या रिस्पांस रहा है टू द सक्सेसफुल इथेरियम मर्ज, एंड थोड़ा क्रिस्टल बॉल गेजिंग करके वो हमें भविष्यवाणी देंगे कि क्या होने वाला है बिल्डर्स के लिए, खास प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पे अपग्रेड होना ये जो नेटवर्क का हुआ है. दिल्ली से, नोएडा से जुड़ रहे हैं another person who's wearing a smart yellow t-shirt, Ananda Banerjee, our in-house technical expert. How's it going, Ananda? It's going great, Ankit. Thanks for having me, and congratulations to everybody within the crypto community and even outside the crypto community on the Ethereum Merge. बहुत बड़ी खबर और it's looking good. It's looking good for all of us. It's looking good for all of us. मर्ज मुबारक, जैसे हम कल से एक दूसरे को विश करें. लिटरली एक त्योहार जैसा माहौल हमारे लिए बन गया है क्रिप्टो कम्युनिटी में. तो आनंदा इज गोना स्पीक अबाउट, जैसे आप प्राइस एनालिसिस पे हर हफ्ते देखते हैं उनको, प्राइस चार्ट्स की कैसी मूवमेंट रही है. काफी अनएक्सपेक्टेड कुछ गतिविधियां हुई है चार्ट्स में, सो ही इज गोना टेक अस थ्रू दैट. एंड देन ऑफ कोर्स जॉइनिंग अस फ्रॉम CoinSwitch HQ are Arunima Rao and Palak Malhotra. We're going to go to both of them. They're going to talk about what's been trending on the interwebs. Crypto Twitter पे क्या memes viral जा रहे हैं. So first up, over to you Arunima. I believe वहाँ पे कुछ Ethereum merge party शार्टी हो रही है, and thanks, मुझे आपने नहीं पहुंचाया लेकिन पिज्जा ऑर्डर कर दिया आपने. हाय अंकित, इथेरियम मर्ज की हार्दिक शुभकामनाएं. माहौल यहाँ पे बिल्कुल ही गर्मा गर्म है, just like this pizza. You're absolutely right. The rumors are true. यहाँ पे एक पिज्जा पार्टी चल रही है to celebrate the merge. Oh and, man, that is so yummy. I know, right? Everyone's super charged. यहाँ पे बहुत electric environment है, and this is the first time I'm seeing something like this. And understandably, क्योंकि crypto दुनिया में इतना बड़ा event है, तो everyone's very very excited. The entire CoinSwitch family has come together. In fact, हमारी एक blog team है, which has come up with Switch Daily. The newsletter, and Nisha, our key writer there, has come up with a detailed review of the Ethereum merge, post-merge. To all the viewers, please इनको check out, newsletter को check out कीजिए. Switch blog, maybe there's one whole section on Ethereum merge, so all our coverage is there. So please try to check it out. In fact, we have Hassan and Umang here. Hi. Hey guys. Hello. Eid merge मुबारक. How are you guys celebrating? मर्ज मुबारक हो आप सबको. तो ईद से सस्ते ग्राफिक कार्ड खरीदने वाला हूँ गॉड ऑफ वॉर खेलने के लिए, जो कि फ्री होने वाले हैं. अरे वाह. से प्रूफ ऑफ स्टेक पे जब लोग मूव करेंगे. Wow, God of War gaming plans over here. Perfect Friday night plans. What about you, Umang? And I am a music fanatic, so new lyrics has been now in my head, which is this. Oh, new lyrics. What are you talking about? New lyrics? कौन सा गाना? I'm seeing dancing pandas. Arunima, क्या है ये lyrics? कौन सा गाना है? This is, you won't believe it, this is an actual song on the Ethereum merge which is being playing in the CoinSwitch office. Absolutely crazy. Yeah, it has been released just yesterday, and that is what I'm singing the verse song. Pizza लो, Arunima से जल्दी से pizza slice उठा लो, otherwise she's not going to give you any pizza. Oh man, I wish I was in Bangalore. क्या गजब माहौल है ऑफिस में. थैंक यू. आपको भी इथेरियम मर्ज मुबारक हो. सब देखने वालों को इथेरियम मर्ज मुबारक हो. Absolutely. And I think merge का best part was the memes online. पूरी Twitter में memes की बरसात थी. So we actually got a living walking meme from our CoinSwitch team. Palak Malhotra, everyone.
Living, walking meme, Palak. What is this? आप I meme don't कब know बन what's गई? happening. वैसे it's a You good guys do this to alliteration. me every time. Meme Malhotra is a very good name for you, Palak. I think meme Thanks. Malhotra. That's It amazing. is sick, you know. And to redeem myself, I bought you pizza. So please. Oh, yes. This is your desi Santa. You are forgiven. Oh my Perfect. god. So, but before we deep dive into the internet trends and memes, let's just quickly switch devices. Shivam, can you please mute that? Oh, yeah. All right. Oh my God. So yeah, so you said memes, and I think Pareen ने introduction में कहा था कि बैंगलोर में बहुत ज़्यादा seriously लोग पार्टी कर रहे हैं merge के पश्चात. And we saw something online. I think you want to share a few slides or pictures with our audiences. Yes. Go ahead, Palak. Did you see this in Kormangla yesterday? Of course I did. It was like a bunch of startup guys. There was, lots of Vitalik posters. There was like music. Like full divas going on. Merge Divas is officially a thing now. Epic, absolutely epic. And I also see, don't miss the person जिसने विटालिक का वो लगा के मतलब गेंदे के फूल लगाए हैं. दुबे जी will be very proud. And उसके बाजू में एक पैंडा है. Comic Con came early. Amaze. Okay, but apart from the memes, etc., I'm sure this was a very, very decisive moment for the dev community, right, Palak? So, उसमें क्या action दिखाई दे रहा है? See, there's a lot going on there, but before that, we have like a couple of memes to show you guys, because like we've got to start it off at like the best possible note. Yes. So, I mean, this is how the merge started with, of course, we have to show Vitalik's tweet. It happened India mein, it happened around 12:30 in the afternoon kal, and that's when everybody was celebrating. It was insane. But Arunima, take it from here for the memes. Yeah, there were so many memes. Ankit, Pareen, Ananda, that we just came up with like a selection just to probably like start off on a really light note. The iconic. The distracted boy. Yes. And so this just talks about how much of an impact the merge has had on the entire crypto community, right? All eyes are on Ethereum, and all the other altcoins are like, तो क्या मैं job छोड़ दूँ? You know, like that time. Oh yeah, it's even been compared to the Bitcoin launch event, which is like a pretty big deal. Yeah. Wow. And of course, this is actually from our own CoinSwitch handle. Vitalik's ultimate mic drop moment. Chilling. Very nice. I love it. It was a mic drop moment, not just for Vitalik. I think it was a mic drop moment for the entire Ethereum and crypto community, at least like the entire decentralized community. Mental. Correct. And finally, the merge is here. क्योंकि 2014 से Game of Thrones में सुना था winter is coming, and Ethereum merge has been coming since 2014. Oh yeah. Finally. That's wow. And this is probably the meme which has been circulating all over the internet. The most it's synonymous with the merge at this point. I love pandas. You can't not like it. For all the Dragon Ball Z fans, I know you guys know this is the fusion, but this is the crypto edition of it. And it explains the merge so well. Exactly. Right? It does. Next, explain. Money Mantra के अगले episode में please get pandas. Arunima, I know you have your way with animals, etc. So pandas in the next episode. Okay. I don't know if you're done with the memes, but I definitely want to know कि dev community के साथ क्या असर हुआ है meme का. Okay, there's a lot that's been going on. Post-merge, developers have gone cuckoo, and we are seeing everything from this. This is an NFT mint of the POS code that was, activated right after the merge. And somebody paid nearly 37 ETH in gas fees to mint this. And that's like a lot of money, guys. I Googled it. Just is live के पहले, and 37 ETH is लगभग 40 lakh रुपए. Wow. Can you imagine? What is 40 lakhs for a piece of history? This will go down in history books, right? So small price to pay. Fair. There's actually more. Developers created an entire protocol for people who attended the merge, any merge events, who took part in any merge events. It's like, concert tickets. आप किसी
किस आर्टिस्ट को देखने गए, कहाँ देखने गए, कब देखने गए. So if you have posted anything about the merge on Twitter, to, you know, if you have attended the entire merge event, you can mint this, you know, you can commemorate the merge. And, you know, I mean, so far, if you look at the numbers, it's been a little underwhelming, but the merge has just begun, you know. Correct. With so much more to look forward to. And I think you're going to explain that up ahead in a bit, right, Palak? The different stages of the merge and how this is literally just the tip of the iceberg. I want to go to Pareen, who I hope we still, I think Pareen can sit so still and so quiet कि पता नहीं चलता कि frame freeze हो गई है or he's just meditating. That's his yogi background, yoga practice background. अच्छा Pareen, तो थोड़ा crystal ball gazing कीजिए, थोड़ी भविष्यवाणी दीजिए, क्योंकि आप Buidlers Tribe चलाते हैं, जहां पे देश के बहुत ही अमेजिंग युवा फाउंडर्स आते हैं, ब्रांड न्यू आइडियाज लेके स्टार्टअप बनाने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए लोग आते हैं. सो उस कम्युनिटी पे और पूरी डिसेंट्रलाइज्ड एप्स डीफाई की दुनिया पे, इस पे क्या असर देख रहे हैं आप इथेरियम मर्ज जैसे एक बड़े इवेंट का? सो यार आई थिंक सबसे मेजर बेनिफिट इसका जो है मर्ज का, वो होगा एंटरप्राइज एडॉप्शन. अभी तक अगर आप देखेंगे तो डीफाई है, एनएफटीज है, मेटावर्स है, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं एंड कंज्यूमर लेवल पर, प्रोजेक्ट लेवल पर काफी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं एंड ऑफ कोर्स मेजॉरिटी फेलियर रहे हैं. बट अब तक में द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म फॉर दिस इंडस्ट्री वाज कि ये कितना एनर्जी कंज्यूम करती है. ये इंडस्ट्री अगर लेट्स से आज और इसमें बिलियन लोग आ जाते हैं तो ब्लॉकचेन्स पहले तो स्केल नहीं होगी, दैट्स वन बिग प्रॉब्लम. उसके अलावा जो स्केल होगी उसमें वी डोंट नो कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होने वाली है. सो ऐसा बोल रहे हैं अभी कि इथेरियम पीओएस पे जाने से 0.5% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी स्पेंड कम हो गया है, विच इज अ बिग डील. कि पूरी दुनिया की सारी इलेक्ट्रिसिटी में से 0.5% इलेक्ट्रिसिटी कम जल रही है. I have a question and a doubt here because कई सारे, एक तो maths was never my strong subject. 0.5% शायद पहले इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था इथेरियम और अब 0.2 कम होने वाला है, ऐसे कुछ नंबर है ना? There are a couple of these decimals. इसमें से ये है कि 0.5 कंज्यूम करता था वो, अब जाके उनका टारगेट इज टू एक्चुअली मेक इट कंप्लीटली कार्बन न्यूट्रल. तो अभी के लिए जो मर्ज हुआ है, पीओएस शिफ्ट हुआ है, दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट. इवेंचुअली एम ये है कि जितने कार्बन क्रेडिट्स है उसको ऑफसेट किया जाए किसी तरह से. एंड ये एंटरप्राइजेस के लिए दिस बिकम्स अ वेरी गुड प्ले बिकॉज नाउ दे नो के चलो ये एटलीस्ट हार्मफुल नहीं है. सेकेंड थिंग आई थिंक जो सबसे ज्यादा डेवलपर्स एक्साइटेड है, जिसके लिए जो लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो एक्साइटेड है, दैट इज द स्केलेबिलिटी पार्ट. अब हमें नहीं पता है क्योंकि ये फर्स्ट हिस्टोरिक है, फर्स्ट टाइम हुआ है, बट थियरी ये कहती है कि अब ये इथेरियम का कंसेंसस एल्गोरिथम ज्यादा स्केलेबल हो जाएगा. तो ज्यादा ट्रांजैक्शन जा पाएंगे, कम गैस फी होगी. ये थियरी है, अभी इसको टेस्ट करना है, बट एटलीस्ट लार्जर कम्युनिटी ये बिलीव करती है कि ये स्केलेबिलिटी में भी हेल्प करेगा इथेरियम को पीओएस पे आने से. तो अब ये दो मेजर बेनिफिट्स है. इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आसपास है जो चल रही है, बट आई थिंक ये दिवाली है डेवलपर्स के लिए. ये दिवाली है डेवलपर्स के लिए. Absolutely love that line. If I can just probe further with one question, are there any use cases or actual business ideas, enterprise ideas जो अब ज्यादा मुमकिन या बेहतर मुमकिन होंगे because of proof of stake consensus layer mechanism compared to previous proof of work mechanism? ऐसे कोई सिनेरियो आपको दिख रहे हैं? हाँ, आई डोंट थिंक वैसा है. सी प्रूफ ऑफ वर्क हो या प्रूफ ऑफ स्टेक हो, उसको आप इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन समझिए. उसका काम है गाड़ी को आगे ले जाना, राइट, इन अ सेफ मैनर, सिक्योर मैनर.
अब आपने ज्यादा एफिशिएंट इंजन लगाया तो उसका फायदा यही है कि गाड़ी और ज्यादा तेजी से आगे ज्यादा तेज बढ़ेगी, जाएगी, which means ज्यादा लंबा चलेगी। ज्यादा डेवलपर्स, ज्यादा एप्स, ज्यादा यूजर्स, ज्यादा रेवेन्यू एंड ओवरऑल इकोसिस्टम बढ़ेगी अब धीरे जाके। बट पर से जस्ट प्रूफ ऑफ स्टेक कोई ऐसा यूज केस एनेबल नहीं करता। जो अडॉप्शन साइड पे है, जो मार्केट है रिटेल पहले से काफी बुलिश थी, बट अब इंस्टीट्यूशंस आकर बात कर रहे हैं, जैसे स्टारबक्स अब पॉलीगॉन पर बना रहा है, पॉलीगॉन इज कार्बन न्यूट्रल। तो ये मेजर स्टेप है कि एंटरप्राइजेस जिस दिन इसमें अपने यूजर्स ले आएंगे तब जाके मास अडॉप्शन होगा। अमेजिंग, अमेजिंग। मर्ज की वजह से आई थिंक द नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग टू गेट अ नॉस बूस्ट, उसका शायद हमें पूरी तरह से अभी अंदाजा नहीं होगा। वी आर गोइंग टू कीप अ कीन आई ऑन द एंटायर ecosystem over the next months, years, and that's exactly our mission here at CoinSwitch, especially of the content team, to constantly keep chronicling these people and these projects. Okay, let's come to Ananda. Ananda, I hope your charts are all fired up, क्योंकि पिछले 48 घंटों में, 48 hours में, one day before the merge and immediately one day after the merge, we've seen a lot of price action, right? And some of it has surprised people, but did it really surprise you? Take it away, Ananda. See, the first thing which I'm going to come to, सबसे जरूरी बात, आज मैंने येलो भी इस रीजन की वजह से पहना है, because if you mix red and green in the right portions, you get yellow. So दिल में green है पर आंखों के सामने red है. So I won't say कि I'm completely surprised or taken aback, because people thought that this is going to be Ethereum's moment under the sun. Right. Huge thing is going to come, but there were certain trends which did show us that this was an event. मतलब अगर हम short term price की बात करें, it was more of buy the news and sell the event, and something of that sort happened. So let's go to first before going to the chart, I will just show you a trend. That's also a chart per se. So let's get to that. Just let me know if the screen is visible or not. हाँ जी, बिल्कुल कीजिए ना शेयर। आनंदा तो शायर है पहले दिल से और फिर टेक्निकल एक्सपर्ट है। Is it visible, all the folks? Is my screen visible? Yes, we can see chain analysis. Yeah. Yes. So according to the data, अगर हम जाते हैं तो आप देखिए कि see, I will just take you back a bit कि जब हम 19th August, 18 August को जब इथेरियम थोड़ा सा ऊपर था, and let me go to the 90-day thing, जब 17 जुलाई के बाद से इथेरियम ने थोड़ी सी तेजी दिखाई थी, you could see कि थोड़ा नीचे था, these lower troughs were coming कि 6 digit में थे inflows, if you can see. And inflow क्या होता है? When you send Ethereum to the exchange, हम exchange में चीजों को क्यों घुसाते हैं अपने different individual wallets से? Naturally, most of the people do it for selling purposes. So once the exchange inflow increases बहुत ज्यादा, तो selling pressure थोड़ा सा नजर आता है. Now just get to the 14th of September. अब 14th of September को प्लीज एक बार आप देखिए कि सेलिंग प्रेशर कैसा था. It was in 7 digits. And it kept on increasing. 10 सितंबर से 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर and 14 सितंबर. One day before the merge. Yes. So लगा था, it was like an ominous sign. Some people ignored it, बहुत लोगों ने, but जो लोग फॉलो करते हैं ट्रेंड्स को, बिकॉज अब अगर नीचे में स्क्रॉल करूं तो देखिए ट्रेड इंटेंसिटी होती है, ट्रेड इंटेंसिटी इट ड्रॉप्ड. देखिए अच्छा हाउ लो इट वाज. पहले ट्रेड इंटेंसिटी कहां थी ये देखिए, इट वाज स्टिल अप एंड पीपल स्टार्टेड काइंड ऑफ लेटिंग गो, बिकॉज बहुत लोग सोच रहे थे कि, एंड सम इन्वेस्टर्स इवन दे वर कि यार मर्ज तो बहुत स्मूथली चला गया, कुछ वोलाटिलिटी को राइट करने का मौका ही नहीं मिला, एंड अ लॉट ऑफ स्टफ हैपेंड. या and just on the price action, and that is what happened, like that is what the macro trends or on-chain metrics suggested. Understood. Now let's come to the actual Ethereum chart और उसकी प्राइस देखते हैं. So आज सुबह निशा ने लिखा था स्विच डेली न्यूज लेटर में, which all of you must subscribe to. रोज वो डिटेल रिपोर्ट लेके आती है ऑफ द क्रिप्टो वर्ल्ड एंड इकोसिस्टम, कि आई थिंक पिछले एक आध दिन में ही, एंड इफ यू कैन लोड अप द चार्ट साइमल्टेनियसली आनंदा, पिछले एक दिन में ही लगभग 8% का कुछ मेरे ख्याल से प्राइस में ड्रॉप आया है इथेरियम का. सो इफ यू कैन हेल्प अस मेक सेंस ऑफ दैट, व्हाई इट हैपेंड, जबकि जैसे आप कह रहे थे कि एवरीबॉडी वाज बुलिश क्योंकि पीओएस जाने के बाद जो सप्लाई है वो भी क्रंच होने वाला है. सो एवरीवन थॉट कि अचानक से मतलब एकदम पूरा पारा चढ़ जाएगा, बट वैसे हो नहीं रहा है. So Ankit, is my screen visible? हाँ जी बिल्कुल visible. Yeah.
सो क्या हुआ कि ये जो डिफ्लेशनरी, दिस नेट डिफ्लेशनरी है कि जो सप्लाई क्रंच होगा, इट वुड बी अ सप्लाई शॉक एंड इट वुड बी अ ग्रेट रिजल्ट्स, दैट इज गोइंग टू हैपन, बट इन टाइम. क्या होता है कि थोड़ा सा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी ईयर एंड, मे बी बाय द टाइम Q4 ऑफ 2022 एंड्स, ये सब. पर जो शॉर्ट टर्म है, जैसा मैंने कहा कि बहुत लोगों ने एक्सचेंज में डाला, दे वांटेड टू सेल द इवेंट, एक्चुअली निकल जाना चाहते थे कि दे वांटेड टू सिट ऑन द मनी पर से. सो प्राइसेस में देखिए इट ड्रॉप्ड. अगर मैं ये है 14 सितंबर जब कुछ सब थोड़ा सा ग्रीन में था, एंड देन दिस बिग कैंडल डाउन, it was close to 7 to 8% drop. और अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, you can see this upper trend line and you can see this lower trend line. It's more of a wedge, it's ascending up. So ये wedge का जो नीचे वाला trend line है, ये टूट गया है अंकित. It has gone down. This candle is formed below that. Yeah, 1458 के आसपास, 1458 के आसपास कामकाज कर रहा है. 1424 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है. देखिए पिछले बार भी 1420 के आसपास ये दो कैंडल्स आपको दिख रहे होंगे, सपोर्ट को एक्सेप्ट करके वापस चला गया, नीचे नहीं गया. बट आई वांट टू ऐड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ऊपर जाता है तो 1670 का लेवल, 1680 का लेवल बहुत जरूरी है. फॉर द टाइम बीइंग 21 ऑफ सितंबर को फेड हाइक्स की बात होने वाली है. दैट इज गोइंग टू बी अ मैसिव ट्रिगर. दैट इज, आई डोंट नो which direction it would be, what would be the market sentiments, but 1420 is going to be a very important level, and then 1357. If it drops further, we can see some thoda zyada lal dikh sakta hai market for in the short term only. That's it. That would be the chart for now. That's lovely. Okay, we've got a couple of questions from viewers. तो दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा आनंदा, जिसके बाद this question also comes to Pareen. So Pareen, be ready with your answer. एक सवाल a lot of our viewers are asking on the YouTube live, वो है कि बिटकॉइन का क्या हो रहा है, बिकॉज आई थिंक बिटकॉइन भी लाल में है. सो अगर आप बिटकॉइन का चार्ट, इफ यू डोंट माइंड, एंड वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस बिफोरहैंड, सो आई टोटली गेट इट इफ यू डोंट वांट टू डू इट, बट नोइंग यू probably have your own analysis on bitcoin as well. You're always on top of this situation. So just load up the bitcoin price chart and आप उसके price action की बात कर सकते हैं. Then we'll come to again, everything that we say on the CoinSwitch YouTube channel, this is not investment advice. बार बार लगातार हम कहते हैं, प्लीज अपना रिसर्च कीजिए, DYOR, do your own research, and अपनी रिस्क एपेटाइट और कैपेसिटी के मुताबिक ही मार्केट में पैसा लगाएं. So Bitcoin का चार्ट आनंदा, if you can load up. Sure. And then my next question is going to be, what is the kind of पंडितों के मुताबिक, what is the price prediction for Ethereum in the next 3 to 6 months? And Pareen, that question is going to come to you as well, because at some point in your alternate life, you used to track these price charts very, very closely. I don't know if you do that anymore. चेहरे पे जितनी हंसी है उससे लगता नहीं है you track it every day. But Ananda, over to you, Bitcoin chart. Yes. See, अगर हम Bitcoin chart का overview देखिए, if you zoom it out a bit, then the same thing happened. This red candle on 13th of September, क्योंकि Bitcoin क्या, it was not waiting per se for the merge. अभी भी market dominance, it's still the king when it comes to the market dominance, over 39%. But Bitcoin का क्या है, it's very closely correlated to all the equity American space, dollar index, yes, everything. So जैसे ही डॉलर इंडेक्स एंड इस चीज में मूवमेंट होती है ऊपर की तरफ, बिटकॉइन में हम थोड़ी सी नीचे की तरफ मूवमेंट देखते हैं, बिकॉज इट इज सपोज टू बी अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन. सो जैसे ही वहां पे कुछ बढ़ता है, यहाँ पे चीजें थोड़ी मूव करती हैं. सो अभी भी इट्स मूविंग क्लोज टू $19,700. एंड ये देखिए 18,900 19,000 पे देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि बार बार एक्सेप्ट होता है. उसके नीचे जाता है तो 17,500 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बिटकॉइन का. ऊपर की तरफ के मूवमेंट्स ना बात करना ही सही है, अनटिल और अनलेस 21 तारीख का इवेंट हमारे पास क्लियर हो जाए. मे बी 75 bps हाइक इज कमिंग, बट फॉर नाउ आई वुड like suggest to wait on the sidelines and see the market how it's moving till we have a clear trend. Understood. Got it. Perfect. Last small question. I love how Arunima एकदम शांति से वहां पे पिज्जा मतलब दबाई जा रही है. Fantastic. Nice way to make us jealous. Ananda, last question. पंडितों के मुताबिक, whatever you are tracking, क्या price estimate है Ethereum का with the deflationary, that movement that's going to happen? Yeah, see, none of this is financial advice which we add. We should always do our own research. The thing is that with Ethereum, because seeing the November trend, last November when it closed down to 4,800, that was a thing for Ethereum. Bitcoin was close to 70,000 at that time.
So if we go by that, once this net deflationary tokenomics gets improved, it starts kicking in, we can see it closing above. It has to go above 2000 for some time. It has to sustain the 2000 levels. Then we can look for 2400, 2500, maybe early next year, provided the market sentiments are permitting and everything is like this. Roger that. Thanks so much for that detailed technical breakdown, Ananda. आप सबको CoinSwitch के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और आनंदा को सोशल मीडिया पे फॉलो स्टॉक कर लेना चाहिए, बिकॉज अमेजिंग नगेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो शेयर करते रहते हैं और आपसे पैसे भी नहीं लेते इस चीज के. इससे अच्छी डील हो ही नहीं सकती मार्केट में. ओके Pareen, क्विकली कमिंग टू यू अबाउट द इथेरियम प्राइस एस्टिमेट जो आप देख रहे हैं ओवर द 3 to 6 month horizon. So I think you're right. मैं ट्रेड मतलब डे ट्रेडिंग तो नहीं करता अभी, बट जनरली मार्केट का इतना नेटवर्क है that people are talking about something around at least 3-digit Ethereum is what is being talked about right now. 3-digit में कितना नीचे जाएगा, it's hard. Many people forget कि last bear market में Ethereum went from $1,500 to $180 or $150 or something like that. So उस हिसाब से 4,200 का 420 होना चाहिए. तो we don't know कि कहाँ जाने वाला है. But I would say at least next 6 months don't look very good. Long term में definitely it's very bullish. Also like Ananda said कि ये जो सप्लाई शॉक आया है इसको किक इन होने में थोड़ा टाइम लगता है. इट विल टेक सम टाइम बिफोर लोगों को रियलाइज होगा कि अरे मार्केट में इथेरियम है नहीं. सो दैट प्रोबेबली इज एटलीस्ट 6 to 12 months अवे. जब वहां से बॉटम बनेगा, बॉटम फॉर्म होके फिर प्राइस वापस ऊपर जाएगा. सो दैट्स द idea, but exact number बताना बहुत मुश्किल है. 3-digit sounds still scary as of now. It does. I love how after all this optimism, Pareen is just like, everybody hold my beer. I'm just going to like pepper everybody's expectations and 3 digits. पहले मैं सुन रहा था, I was like, wait, what is he talking about? 3 digits really? एक zero निकाल दिया सीधा. No, but good. I'm really glad you shared that perspective, Pareen, because especially crypto market में अपने सबसे ज्यादा अपने एक्सपेक्टेशंस, खुद के एक्सपेक्टेशंस को चेक में रखना सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है. एंड विच इज व्हाई वी ब्रिंग इन अमेजिंग एक्सपर्ट्स लाइक यू हु हेल्प अस डू दैट. ओके, आई एम गोइंग टू स्विच ओवर टू द CoinSwitch HQ where the ladies are chomping down on pizza. And Palak, Pareen touched upon this one thing. I think you all also said this introduction में जब आप memes वगैरह दिखा रहे थे, and it was all हंसी मजाक. But it wasn't only just हंसी मजाक. बहुत सारे unsuspecting, uninformed नए इन्वेस्टर्स के लिए, राइट, इतना ज्यादा स्कैम बढ़ गया अचानक पिछले 2-3 दिनों में या 2-3 हफ्तों में, खास करके इथेरियम मर्ज के इर्द गिर्द. तो इथेरियम मुबारक तो दूर की बात है, इथेरियम ना मुबारक हो गया इन लोगों के लिए. So what are these kind of scams that people fell prey to? And अगर आप वो शेयर कर सकते हैं तो लोग हम उनको मतलब इन्फॉर्म कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, इससे बच के रहिए. See, it is extremely important. We've said it multiple times before on our channel that do your own research, because there is so much, and it's not just the crypto industry, you know that, right? It's happening across. What is happening after the merge is you see a lot of phishing scams happening. तो ये जो bot accounts हैं, these are not people, these are verified bot accounts. इन्होंने अपना DP change कर लिया है to Vitalik's picture. They have changed their name to Vitalik.eth, or they are very frequently posting tweets with phishing links. What are phishing links? I think Arunima और can ये phishing F वाला phishing नहीं है. This is PHISHING for people. Yeah. Exactly. To clarify, ये वो seafood वाला phishing नहीं है. This is phishing which involves, like, correct me if I'm wrong, Palak. People basically taking money from your wallet, right? Through a suspicious looking link. तो जैसे आप link को click करते हैं, suddenly there's a transaction which is triggered, and
you suddenly robbed. Oh yeah, that's why like we keep telling you, don't go around clicking on links you know receive from anybody, because there's so many of these scams. There's pig butchering, there's like this right now, of course. So you've got to be careful, at least right now, in all industries. We're not just talking about our industry, but across digital assets. सो दो तीन चीजों का खास ध्यान रखना है। जैसे ये दूसरे फोटो में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फर्जी बॉट वाला ट्विटर अकाउंट है, बहुत आपको दिखेंगे कि फ्री इथीरियम ड्रॉप होने वाले हैं, एयर ड्रॉप होने वाला है, फ्री टोकन आपको मिलने वाला है, लकी ड्रॉ होने वाला है। ऐसे कुछ नहीं होता है। कोई आपके ऊपर अपनी कृपा नहीं करने वाला है, कोई आपको फ्री इथीरियम नहीं देने वाला है। एंड लोगों का ये होता है कि जो बेचारे नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, क्योंकि पुराने इथीरियम टोकन का नए इथीरियम टोकन के एयर ड्रॉप के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तो लाइन को स्किप कीजिए, ये कीजिए। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे बहुत ऐसे फ्रॉड लिंक्स भेजे जा रहे हैं। सो प्लीज उसका शिकार मत होइए। एज एन इन्वेस्टर आपको CoinSwitch बार बार कहते आ रहा है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। यू डोंट हैव टू टेक एनी स्टेप्स, बिकॉज ये इथीरियम के नेटवर्क का बैकएंड अपग्रेड हुआ है। एज एन इन्वेस्टर आपको कुछ नहीं करना है। आपके पैसे जो निवेश किए हुए हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, उसमें कुछ तब्दीली नहीं आने वाली है। राइट पलक, अरुणिमा? Absolutely correct. That's true. And for more information, so ताकि आप इन rug pulls and other hacks के शिकार ना बने, we have in fact Switch Daily, जो like we spoke about earlier, which is our newest newsletter, and उसमें authentic information मिलेगा, and not just about all of these rug pulls, but inside the exclusive interviews of people in the Web3 world. जैसे अभी recently we will be interviewing someone from Tezos, which is a leading company पूरे blockchain. Actually Ethereum का competitor है, so it will be fun to hear competitors से merge के बारे में उनकी क्या राय है। बट मुझे लगता है आज के लिए बहुत शिलिंग हो गया अपने खुद की प्रॉपर्टीज का ना। I think we've hit that quota now. सब bosses खुश हो जाएंगे। Okay, I want to ask this question before we draw this YouTube live to a close. Now crypto की दुनिया के लिए, Ethereum maxis के लिए, तो of course this was, like we said, I love what Pareen said. That is a headline out of this YouTube live कि developers के लिए, crypto community के लिए दिवाली थी Ethereum Merge. Wow, Pareen का headline बोलते ही Pareen गायब हो गए हैं. I hope his internet or something resumes. But I want to ask this to Ananda and then to Arunima, Palak, if you all want to opine on this, कि इसका असर, okay, Pareen is back. Awesome. Pareen, merge का असर बाकी दुनिया पे या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की दुनिया पे, बाकी एंटरप्राइजेस पे, क्या हम उसका कोई असर देखेंगे बियॉन्ड जस्ट द क्रिप्टो वर्ल्ड? स्पीकिंग इमीडिएटली हार्डली कुछ होगा। इस शॉर्ट टर्म में इतना कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें अडॉप्शन में हेल्प करेगी टू जस्ट मेक श्योर के इनफ रेगुलेटेड एक्सचेंजेस आ रहे हैं, इनफ DeFi प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, and they are compliant, also faster transactions, and banks को adopt करने के लिए ESG has become a big thing now, which is environment friendly होना जरूरी है। तो these things are going to help, but I don't think short term में हम कुछ इतना देखेंगे। अभी के लिए पार्टी शिफ्ट मोस्टली डेवलपर्स की है, उसके बाद बेनिफिट्स पास होंगे यूजर्स को एंड इन्वेस्टर्स को, सब लोगों को धीरे धीरे। अमेजिंग। पार्टी डेवलपर्स से शुरू हो रही है एंड बेनिफिट्स टू एवरीबॉडी एल्स। आनंदा, एनीथिंग यू वांट टू ऐड टू दैट क्विकली? Sure, yes. I just want to add that with Ethereum shifting to proof of stake, एक बहुत बड़ा player proof of work ecosystem से गया है. So that is going to make a lot of difference. Bitcoin, like as a person who has always looked up to Bitcoin for everything, Bitcoin is going to be a pivotal part now, because now we used to compare Bitcoin, Ethereum, but now it's not about it's a green apple or a Washington apple. It's now apples and oranges now. It changes the entire arena. Ethereum is experienced, but it is entering a POS territory as a fresher. So let's see how it moves, how things go. Within 3 to 6 months, as Pareen also told, things are going to unpack and we'll have more clarity on that. Amazing. Perfect. Any last words from the pizza capital? I mean, the CoinSwitch office? Right. So, in alignment with what Pareen and Ananda said, कि
pre-merge, Ethereum ka energy consumption was equivalent to New Zealand ka energy consumption for 1 year. But this has just changed the complete dynamic, and we're moving to something which is far greener and more sustainable. Though I think Palak has, wants to take it a step forward. Go ahead. I think people are not talking about this, but that's not it. You guys know. Merge is not just about making Web3 greener. It is a big part of it. But जैसे Vitalik ने tweet करा था, I think we can go on to Vitalik's tweet. He told that we have simultaneous other projects going on, parallel to the merge. We have the surge, the verge, the purge, and the splurge. This is all what is the merge, along with all these other 4 processes, going to do is clear up the Ethereum ecosystem. Ethereum ecosystem, when it was proof of work, it was cluttered. Because of course, all this computational power, all this data that was there. So Ethereum is trying to just clean up its ecosystem. जैसे हम अपने emails नहीं delete करते. जैसे दिवाली के पहले घर की सफाई होती है. Just to keep the Diwali analogy. Oh yeah, Diwali analogy. And like, deleting your emails. Like I have 25,000 emails currently. I have to, categorize them. Same. I have to star the important emails. Then I have to delete all the junk. So that is pretty much what Ethereum is trying to do to, of course, become efficient, faster, and, easier to use without having to, of course, Ethereum has spent a lot of money on that, but, without having for us to go through that pain of, high gas fees and all that. I mean, there's a lot that's happening apart from that, which we think we should end with. That is very important. That's what is happening on the regulatory and institutional front, which I think Pareen talked about in the beginning, that it's going to trigger some kind of enterprise engagement, some kind of enterprise adoption. Right. So I think Arunima told me about this. Some governor in Colorado was like... So usually क्या होता है, crypto इतना gray area में है कि governments are skeptical about whether to back any move, if at all. But here we have the governor of Colorado in the US saying ki maybe the world becoming increasingly sustainable is a good thing, right? And we should sort of support this move. Cool guy. But then we've got Gary Gensler. We cannot forget Gary Gensler. Okay, from the SEC, US SEC, he said that there is a very high possibility that after this POS, all the tokens that fall under, all the POS tokens may just fall under the securities law. मतलब कि वो SEC को उन्हें SEC के अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा. मतलब decentralization might just not happen. But like I said, it's like just the beginning, tip of the iceberg. Yes. There's a long way to go, and I think our industry has learned how to deal with regulators and regulations. We're trying to sync with them. We're trying to collaborate as much as possible. So I think this is the beginning. Yeah, it's going to be. We're hoping there's going to be a cakewalk. If not, we're ready for that also. Till then, we've got pizza. Nothing to worry about. On that note, thank you so much to all the amazing people who joined us on this Friday evening, TGIF. Pareen, I'd love to catch up with you when I'm in Bangalore next. Let's hang out offline, do some yogasans, and eat some pizza. Thanks so much for making the time for this. Definitely. Thank you for having me, and lovely talking to all of you. Yay. Awesome. Ananda, Arunima, and Palak, आप लोगों को मैं इसके बाद फोन करके क्लास लगाता हूँ. I'm kidding. Thanks so much for joining and sharing your amazing expertise, and especially the memes. And thanks for making me jealous with the pizza, Arunima. Thank you to all our viewers for joining us on this special broadcast of Crypto Kranti on the CoinSwitch YouTube channel. Please hit the subscribe button, घंटी बजा दीजिए, like, share, सब कुछ ठोक दीजिए. अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो क्रिप्टो कम्युनिटी में हैं, जो क्रिप्टो कम्युनिटी के बाहर हैं. आई थिंक हमारा मकसद है लोगों को इन्फॉर्म्ड, बेटर एजुकेटेड इन्वेस्टर बनाने का, और उसमें आप भी हमारे साथ भागीदार हो सकते हैं सिर्फ सब्सक्राइब करके. थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग. हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.